So if you recall, Bismillah Rahman Rahim. So if you recall, last time we were at 4.3 Internet Protocol, and in that we have studied basically. Sorry, मेरा हाल slides जो हैं part 3 की हैं. Let me share again slides, the other slides. Okay जी. I hope now you are viewing the slides. Yes, sir. नजर आ रही हैं आपको slides? So if you recall, last time we have studied datagram format. Let me quickly go to the datagram format. So this was the datagram format, and there are various headers of version, header length, length of datagram. Then we had maximum and minimum limit of datagram. Minimum is typical, is basically 1500 bytes or less, and maximum allowed is 64 kilobytes. Then we talked about type of service, that different services are available. Then we have talked about TTL and upper layer protocols, header checksum, fragmentation, reassembly, and header checksum, and source and IP address, 32-bit IP address. इसमें किसी को क्वेश्चन है? लास्ट टाइम हमने ये काफी कुछ डिस्कस कर लिया था. अगर किसी को क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क. Okay, I'll assume you don't have any question. This was a practice question which we done, so let's skip them. Then we talked about IP fragmentation and reassembly, and we said that underlying networks have a maximum transfer size, or MTU, maximum transfer unit, the capability of datagram, which can be transferred through certain network. So basically, we have to take care of this MTU, and if your incoming datagram size is larger than the allowed MTU, then we have to fragment it into pieces, right? So one big datagram is divided into several datagrams. So this is the animation. If we look at this animation, this big datagram is divided into three smaller datagrams, right? See? This is what we call fragmentation. And these three smaller datagrams, fragments, we will call them as, they will travel through the network and they will be reassembled at destination, only at final destination. So there are headers, fields which you have seen little while ago regarding to fragmentation. They will be used to reassemble it at destination. Then this is the example of fragmentation and reassembly. So if you have any question, you can ask, because we have already done it in the last time. But let me quickly review that. For instance, here in this case, there is a 4000 byte datagram, and MTU size is 1500 bytes. So naturally, 4000 byte datagram will not pass through that network because it is having a MTU of 1500 bytes. So therefore, we have to divide it into fragments. So let's say that we have divided into fragments of, because MTU is 1500 bytes. So if you know that 20 byte is a header, so if you exclude 20 byte of header, so then we have left with 1480 bytes. So these are the 1480 bytes. Total length is written, including header, 1500 bytes, but data field is 1480 bytes. So ID will tell you that this basically all these fragments belong to same datagram. So you look at here, same ID XXX. Fragment flag field tells you that whether it is a last fragment or more fragments to follow. If fragment flag is 1, it means that there are more fragments to follow. So if fragment field flag is 0, it means this is the last fragment. So you look here that we have divided into 3 fragments. So the last fragment is having a fragment flag 0. Offset is calculated. Offset is basically used to, because reassembly is done at the destination. So how reassembly will be done? Reassembly will be done with the help of offset. So the first fragment will have offset 0 because it's a first fragment, and then
we will calculate the fragment offset in terms of bytes. So we'll divide the number of data field bytes divided by 8. So because the last fragment is having a 1480 bytes, look at this, 1500 means 1480 bytes of data. So the offset calculated for next fragment will be 1480 divided by 8. So it comes out to be 185. At the receiver, this is done at sender where fragmentation is done. Receiver will use this 185 multiplied with 8 and then append this datagram with the previous one. Similarly, this offset 370 कैसे आया? कौन बताएगा 370 offset कैसे आया? सर 1480 प्लस 1480 को डिवाइडेड प्लस 1480 डिवाइडेड बाय 8। जी बिल्कुल, लास्ट दो फ्रेगमेंट्स को सम करेंगे डाटा फील्ड्स के और उसको 8 से डिवाइड करेंगे। लास्ट दो फ्रेगमेंट्स के 1480 प्लस 1480 जो भी आंसर आएगा 3000 समथिंग, उसको आप डिवाइड करेंगे 8 से तो 370 आ जाएगा, राइट? So this is something how it is being done. Okay ji, any question? If you have any question in fragmentation reassembly, you are welcome to ask. Because this is something we are doing a quick review, so I will not spend a lot of time on it. And then there was a one question which we have done, that reassembly is done at destination host. Okay, now this is the starting point for today's lecture. So now we'll talk about IP addressing. Now keep this thing in mind that there are two versions of IP version 4, currently in use IP version 6. Basically, predominantly today's internet is IP version 4 compliant, but there are islands of IPv6. So initially we will study IPv4, which is distinguished by having a IP addresses of 32 bits, and then we will talk about IPv6 format and a related discussion at the end. And basically IPv6 is 128 bit. So let's start with IPv4 discussion. So if you look at this, there is a networks. There are some networks which you are seeing here, and there are how many clients, systems. There are, for example, in left network, you see a subnet. We call it a subnetwork. In fact, you see three clients. In right side you see two clients, and in bottom side two clients. But you have to keep this thing in mind that as far as router is concerned, router will be going to assign IP addresses to each of its interface. If router is having a basically three interfaces, in this case there will be three IP addresses assigned to it, right? So in this way, this is a subnet, and each basically interface, either it is host or interface, is associated a 32-bit identifier. You can see here the standard notation, we call it as dotted decimal notation. Dotted decimal notation. So there will be 4 bytes, and each set of digits, group of digits, will represent 1 byte. Either it is, for example, 223 in this case, look at my cursor movement, is a 8 byte, and 1 is also a 8 byte. We will append extra zeros, 8 bits, sorry, we will append extra zeros. हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 8 zeros भी साथ लगाएंगे MSB साइड पे. So anyways, total is 32 bits, right? 4 bytes. So keep this thing in mind that each client, host or client, whatever you say, is distinguished or is associated with the IP address, 32-bit IP address, which you are seeing here, that each host is assigned a 32-bit IP address, plus each interface of a router is also associated with or assigned with 32-bit IP address. How this allocation is done, we'll talk about it in detail in later discussion, but just assume that we have assigned these values to these interfaces as well as hosts. Now, interface basically is a term which we will commonly encounter in our discussion. So it's a connection between host and physical link. यहाँ पे अब आप देखें, और राउटर, होस्ट और राउटर एंड फिजिकल लिंक, ये जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस है फिजिकल लिंक, और जो होस्ट के दरमियान जो जो कनेक्शन है उसे हम इंटरफेस कह रहे हैं.
इस केस में होस्ट के ये केस में ये फिजिकल लिंक है, और यहाँ पे राउटर के केस में ये फिजिकल लिंक है. So basically interface is a connection between host, router and physical link. And as I told you earlier, the routers typically have multiple interfaces. Host typically has one or two interfaces. टू इंटरफेसेस इस तरह होते हैं कि आपके जो होस्ट के अंदर अगर सिर्फ इथरनेट कार्ड लगा हो तो वन इंटरफेस होगा, लेकिन अगर आपने वाईफाई कार्ड भी लगा हुआ है तो उसके दो इंटरफेस हो सकते हैं, राइट. This is preliminaries of IP addressing mechanism. So if you have anything to discuss, this is a right side basically is telling you about decimal representation. So please have a look on it, and if you have any question, welcome. Review it for 1 minute. Can you hear me जी? आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Okay, that's good. इंटरफेस से मुराद ये इसके लिंक्स हैं. You can say like this. Link जो link है, connection है, जो link है. जहाँ पे आपका कनेक्शन होता है फिजिकल लिंक का, पोर्ट के असल में पोर्ट्स होती है ना, आपने देखी होंगी. वो पोर्ट होती है, पोर्ट पे आप RJ45 कनेक्टर के साथ वो फिजिकल लिंक को लगा देते हैं. So please concentrate on each slide of it, क्योंकि ये सारी slides जो है ना, they are very much connected to each other. So if you missed the previous slides, then you will, probability is very high that you will miss the remaining discussion of the slides. You will not be able to understand completely. So therefore, I'm giving you ample time of 1 minute to go through this text, and if you have any supplementary question, you can ask. So I never try to discourage you to for asking questions. So therefore, please ask question. If I mean, it's up to you, but if you don't ask question, I'll assume that you have understood it. So this is a basic assumption which I am having, although that might not be true for all of the students. Sir, why can't we have one IP address for router? Like why we use a number of router interfaces? No, we don't have one IP address for router. In this case, the router is having a 3 interfaces and it is having 3 IP addresses. I didn't understand your question. Can you rephrase your question or repeat the question? I am asking a question. Why can't we use a single IP address for router? बिकॉज बेटा के इसकी जो बेसिक रीजन ये है कि एक तो ये है कि इंटरफेस पे डिपेंड करता है, हाउ मेनी इंटरफेसेस इज राउटर इज हैविंग, राइट. फॉर इंस्टेंस, लेट्स से आई विल गिव यू एग्जांपल फ्रॉम होस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. होस्ट में अगर आपने यू हैव इथरनेट कार्ड एंड वाईफाई राउटर, राइट, ठीक है. तो व्हाट विल हैपन इफ यू आर डूइंग कम्युनिकेशन विद इथरनेट इंटरफेस, और तो इथरनेट इंटरफेस के लिए आप जाहिर है आपका सोर्स एड्रेस आईपी एड्रेस होगा एक, और इथरनेट इंटरफेस के थ्रू कम्युनिकेशन होगी. अब अगर आप वाईफाई से करना चाहते हैं तो वाईफाई के लिए फिर आपको सेपरेट इंटरफेस चाहिए. आप एक ही इंटरफेस से वायरलेस और वायर्ड दोनों नहीं कर सकते. Same is the case router. Router basically used to connect multiple networks together. These are sub networks actually. Sometimes people call it as networks. These blue island which you are seeing, this is a one network. If you want to connect this network, left side network, to the right side network, you need a router. You cannot connect two different networks with a switch, or you need a router.
So if you are connecting two networks, different networks with a router, how you can do that with one interface? So this is a logical rationale behind it. So you need a two interfaces. Left side interface will be connected to left internet network, and right side interface will be used to connect to the right network. I hope. So I think so. Different interfaces should have different IP addresses. Like if you have Ethernet, you should have one IP address, and if you have a wireless connection, you should have a second interface IP address for the router. No, 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 no. Actually, things are little bit complex in this context. क्लाइंट का एक ही आईपी एड्रेस होगा, इंटरफेसेस दो होने का मतलब दो आईपी एड्रेसेस नहीं हैं। एक्चुअली जो आपका जो इथरनेट है ना, और जो वायरलेस वाईफाई है, ये लेयर 2 पे काम करते हैं। बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन लेयर 2 पे होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि आप उनके दो मैक एड्रेस होंगे, वन मैक एड्रेस फॉर इथरनेट कार्ड, वन मैक एड्रेस फॉर वायरलेस कार्ड। ठीक है, दो इंटरफेसेस तो होंगे, लेकिन उन दोनों इंटरफेसेस का जो मैक एड्रेस है वो डिफरेंट होंगे, आईपी एड्रेस एक ही होगा। ओके सर। ओके, चैप्टर 6 पढ़ेंगे तो उसमें लिंक लेयर भी पढ़ेंगे। तो इसलिए आईपी एड्रेस जो है वो एक ही होता है, इंटरफेसेस हो सकते हैं होस्ट के। क्योंकि अगर आप इफ यू रिकॉल चैप्टर 1, you have studied at link layer we use MAC addresses, right? Right, sir. Okay ji, any other question? Okay, if no, then let's proceed further. Next slide. So this is our network, and how many interfaces actually connected? So can you calculate how many? Question is how many interfaces connected? I am at slide number 12. Sir, three. So naturally you can calculate overall chapter 7, लेकिन look at this practically इंटरफेसेस आप कैलकुलेट करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखें, अब प्रैक्टिकली क्या होता है कि स्विच यूज किया जाता है। ये तीनों इंटरफेसेस, एक तो जो है ना प्रैक्टिकल नेटवर्क्स के अंदर स्विच इन बिटवीन होता है, और उस स्विच के थ्रू जो है वो राउटर से कनेक्ट होता है। तो इथरनेट इंटरफेसेस, ये 3 इंटरफेस है लेफ्ट नेटवर्क में, ये कनेक्ट होते हैं बाय इथरनेट स्विच। दिस मोर डिटेल विल कम इन चैप्टर 6 इन फैक्ट। सो ये देखिए स्विच लगा हुआ है, लेकिन स्विच जो है वो लेयर 2 डिवाइस है, तो हम अपने डिस्कशन में नेटवर्क लेयर में इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बट यू शुड हैव अ प्रैक्टिकल आइडिया कि एक्चुअली होता कैसे है, नेटवर्क कनेक्ट कैसे होता है। ये 3 इंटरफेस लेफ्ट के हैं, ये एज डायरेक्टली नहीं कनेक्ट होते, ये थ्रू स्विच जो है वो राउटर पे कनेक्ट होते हैं। सेम इज द केस हियर एंड सेम इज द केस हियर। In this case Wi-Fi is there, बॉटम नेटवर्क में देखिए Wi-Fi के थ्रू, वायरलेस के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो ये तीनों जो है Wi-Fi से कम्युनिकेट करते हैं, और Wi-Fi के थ्रू राउटर से कम्युनिकेशन होती है। Have a look on it. But for now don't worry about this, how one interface is connected to another with no intervening router। हम जो है इसको इसको वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्विच के थ्रू होते हैं। स्विच के अंदर नेटवर्क लेयर नहीं होती, इन स्टैंडर्ड स्विच के अंदर नेटवर्क लेयर नहीं होती। सो दैट इज नॉट अवेयर अबाउट नेटवर्क लेयर स्विच, so therefore you don't need to worry, but practically speaking you should have an idea कि ये जो इंटरफेसेस हैं ये थ्रू स्विच जो है वो राउटर से कनेक्ट होते हैं, आपस में कनेक्टेड हैं नेटवर्क के अंदर। ओके is it okay to everyone?
Yes, sir. ओके जी. सो नाउ सबनेट्स. मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि these are the three subnets. This network is, ये जो blue island आपको नजर आ रहा है, I'm calling it as island is not a standard term. This is just for explanation purpose. ये जो basically blue color के आपको islands नजर आ रहे हैं, ये basically are telling you that this network consists of three subnets. Subnet is a contraction of subnetwork, right? So what's a subnet? Let's define a subnet. Device interfaces that can physically reach each other without passing through intervening router. So this is the definition of subnet. For example, left side पे देखें, ये left side का मेरे कर्सर को देखिएगा कि ये तीनों host जो हैं, they can reach this router interface without intervening router. दरम्यान में कोई router मौजूद नहीं है, ये directly can be reached to this router without passing through another router. मगर ये जो अब आप राइट साइड पे आपका ये है, ये इस लेफ्ट के सबनेट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आप इस होस्ट से इस होस्ट पे राउटर को पास किए बगैर नहीं पहुंच सकते. So this is a definition of subnet. So by this definition we are having how many subnets? Sir, 3. We are having three subnets, right? I hope this definition is clear. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछें. If you have any question, please welcome about definition of subnet. It's very important. So what is the meaning of intervening router? इंटरवीनिंग राउटर का मतलब यह है कि राउटर के थ्रू होके ना गुजरे. आप मसलन इस ये जो होस्ट है, टॉप होस्ट जो 223.111 है, इसको आप रीच इस होस्ट से ये बॉटम होस्ट 223.113 पे पहुंच सकते हैं राउटर के डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू राउटर. ऐसे ही है. You can reach directly each host in left network to any other host without passing through router, right? Yes, sir, right. So this is the intervening router. मगर so all these three host and ये interface ये एक subnet का हिस्सा है. ये जो इंटरफेस जो राउटर का लेफ्ट इंटरफेस है वो इस सबनेट का हिस्सा है, जो लेफ्ट साइड पे सबनेट है. जो राइट साइड पे जो इंटरफेस है राउटर का वो राइट सबनेट का हिस्सा है, और जो बॉटम वाला जो इंटरफेस है बॉटम सबनेट का हिस्सा है. तो ये आप एक चीज ध्यान में रखें कि जनरली होस्ट जो है वो एक ही सबनेट का पार्ट होता है, लेकिन ये जो राउटर है ये कितने सबनेट्स का पार्ट है? ये राउटर 3 सबनेट्स का हिस्सा है. राउटर कैन टेक पार्ट इन मल्टीपल सबनेट्स. लेफ्ट इंटरफेस राउटर का लेफ्ट सबनेट पे है, राइट इंटरफेस राइट सबनेट पे है, बॉटम इंटरफेस बॉटम सबनेट पे है, राइट? So this is a distinction about router. Right, sir. Okay ji, next thing. Now we'll talk about detail about IP addressing. अब IP addressing जो है बेसिकली उसके जो है डिफरेंट जो है उसको डिफाइन करते हैं ना डिफरेंट वेज. So IP addresses 32-bit IP address has a structure in which we can divide it into two parts. We say that this 32-bit IP address can be divided into two parts, and those parts are known as subnet part and host part. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. The number of bits in subnet part and host part are not fixed. So how we'll find out that how many bits are in subnet part and how many bits are in host part we'll discuss later. But you need to keep this thing in mind that number of bits in subnet part and host parts are not fixed. So generally जो MSB side की bits हैं, not generally, always MSB side bits are part of subnet part, and LSB sides की जो bits होती हैं वो host part की होती हैं, lower order bits. और subnet part basically is devices in which have common higher order bits. और दूसरी बात यह है कि एक ही सबनेट के अंदर
तमाम जो सबनेट पार्ट की बिट्स हैं वो सेम होंगी. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. कीप दिस थिंग, दिस पॉइंट इन योर माइंड वेरी क्लियरली कि एक सबनेट के अंदर सबनेट पार्ट की बिट्स सेम होंगी तमाम होस्ट के लिए. ओके, इज इट ओके? और जो रिमेनिंग बिट्स होंगी वो होंगी लोअर ऑर्डर बिट्स जो होंगी वो उन्हें होस्ट पार्ट कहते हैं. आगे हम डिटेल फर्दर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीज अपने ध्यान में रखें कि आईपी एड्रेस ऑफ 32 बिट टोटल इज 32 बिट्स, not more than that, not less than that. Out of 32 bits, higher order bits are subnet part, lower order bits are host part, and in any subnet, host subnet part bits are same for every host. So what is changed in every host? There है हर होस्ट का आईपी एड्रेस डिफरेंट है. जब सबनेट पार्ट सेम है तो क्या चीज चेंज हो रही होती है उसके अंदर? host part. होस्ट पार्ट की बिट्स चेंज हो रही होती हैं. होस्ट पार्ट की बिट्स चेंज हो रही होती हैं, इसलिए वो डिफरेंट वैल्यूज आती हैं. इज इट ओके टू एवरीवन जी? No, sir. Have a look on it. I'll give you 10-20 seconds just to think on it. Okay ji, let's proceed to next slide then. Now let's talk about how to define subnet. कैसे हम सबनेट को डिफाइन करते हैं? What is the formula behind it? What is the recipe behind it? So the recipe is this: detach each interface from its host or router, creating an island of isolated network. हर इंटरफेस को उसके होस्ट या राउटर से डिटैच कर दें तो यू विल गेट अ आइसोलेटेड नेटवर्क. आइलैंड की टर्म एक जनरल टर्म है, ये स्टैंडर्ड टर्म नहीं है. ये ऑथर ने यूज किया है, ये स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी में आइलैंड कोई वर्ड नहीं है, ये जो अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है. ओके, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड. सो जस्ट डिटैच इट. फॉर इंस्टेंस, लुक एट दिस. We have detached each interface from its host or router. देखें तो ये islands बन गए हैं. You have an island of isolated network. ये isolated network island है. This is the right side is another island and this is another island. And each isolated network is called as subnet. Okay ji, is it okay? Is it okay so far? क्योंकि अब now I will define a new thing. इसलिए अभी तक किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें. You can ask a question. Okay ji, I assume you have understood it. Now let's move to another term which is known as subnet mask. This is another term which you are going to use. But before I talk about subnet mask, let me tell you that each subnet has its address. Each isolated network जिसे हम subnet कह रहे हैं has a address which is known as subnet address, like a house address. ठीक है, लाइक अ हाउस एड्रेस. एनालॉजी में उस हाउस का जो एड्रेस है, हाउस के अंदर जो है वो क्या है, डिफरेंट पीपल आर लिविंग, डिफरेंट people are living, each people is having its own IP address
but overall house has its one address, and that address is known as subnet address. उसे क्या कहते हैं? We call it as subnet address. One thing. Second thing is that now the question, the thing which I have told you that each IP address is divided into two parts. वो parts क्या थे? कौन बताएगा? Sir, host and subnet. Host Host part and subnet. subnet part and host part. Now the next question is how we will find out how many bits are present in subnet part and how many bits are present in host part. Total is 32 bit. So how we will find out how many bits are in subnet part? अगर आप subnet part की bits निकाल लें तो आप host part की bits निकाल सकते हैं easily. कैसे? अगर आपको subnet part की bits पता लग जाएं तो can you find out the bits of host part? Yes, sir. How? 32 में से माइनस कर देंगे. गुड. 32 में से माइनस कर देंगे सबनेट, क्योंकि टोटल तो 32 है, तो सबनेट पार्ट की बिट्स पता लग गई तो 32 माइनस सबनेट पार्ट बिट्स तो आपको होस्ट पार्ट की बिट्स पता लग जाएंगी. अब सबनेट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ विल फाइंड आउट दैट हाउ मेनी बिट्स आर इन सबनेट पार्ट. So answer to it is that we use subnet mask to find out the number of bits in subnet part. Subnet mask and subnet part are two different things. Keep this thing in mind. Subnet part is not equal to subnet mask. Subnet mask is not a IP address, but it has also 32 bits. Subnet mask की भी 32 bits होती हैं. And look at this subnet mask. This subnet mask says /24. It means that 24 bits out of 32 bits are part of subnet part. ये जो /24 ये बता रहा है कि हायर ऑर्डर 25, हायर ऑर्डर, अगेन हायर ऑर्डर की बात हो रही है. /24 means that higher order 24 bits are subnet part of IP address. तो जो भी स्लैश के बाद जो वैल्यू होगी ये चीज ये बताएगी आपको कि हाउ मेनी बिट्स आर प्रेजेंट इन सबनेट पार्ट. /24 means that how many bits are present in subnet part, higher order bits, but again higher order bits. It means that higher order 24 bits are subnet part bits. Number of higher order bits in this case, when you have /24 for instance here, it means that they are subnet part bits. Remaining कितनी रहेगी host part के लिए bits? 32 minus 24. तो कितनी बिट्स रहेगी होस्ट पार्ट के लिए? 8 बिट्स. ओके जी. Is it okay to everyone? Yes, sir. Okay, so let's proceed further. So this is another subnet. Now this, ये जो रेड कलर में आपको जो एड्रेस नजर आ रहा है आईपी एड्रेस, ये इस सबनेट का एड्रेस है. जिस तरह मैंने हाउस एड्रेस की बात की तो 223.11.0 है, ये सबनेट एड्रेस है. सबनेट एड्रेस इज नॉट इक्वल टू सबनेट पार्ट. सबनेट पार्ट हमेशा 32 बिट से कम होगा. सबनेट एड्रेस, sometimes also known as network address, is always 32 bits और सबनेट पार्ट हमेशा 32 बिट से कम होता है. ओके. और सबनेट एड्रेस को फाइंड आउट करने का यह तरीका है कि सबनेट एड्रेस के अंदर होस्ट पार्ट की बिट्स 0 होती हैं. दिस इज अ स्टैंडर्ड कि सबनेट एड्रेस के अंदर होस्ट पार्ट की बिट्स 0 होती हैं. ऑल बिट्स ऑफ होस्ट पार्ट्स आर ऑलवेज 0. सो हाउ यू असाइन अ सबनेट एड्रेस? First you need a subnet mask, and then you will make all the host part bits 0, so you will get a subnet address. अब for instance इधर देखें
ये /24 का मतलब है कि कितनी बाइट्स जो है सबनेट पार्ट की हैं, ऊपर वाले नेटवर्क में कितनी बाइट सबनेट पार्ट की हैं, 24 बिट्स हैं ये। तो कितनी बाइट्स होगी 24 बिट्स में, कितनी बाइट्स होती हैं? 3 बाइट्स सर। तो हायर ऑर्डर 3 बाइट्स जो हैं वो सबनेट पार्ट की हैं, 2 2 3 फर्स्ट बाइट, 1 सेकंड बाइट, थर्ड 1 सेकंड बाइट। अब जो आखिरी बाइट है ये होस्ट पार्ट की है, ऐसे ही है, और ये जीरो है, ऑल जीरोस। This is a standard for this. Okay, whenever you want to assign a subnet address, you will make the host part bits all zeros. Okay. So this is a subnet address for top network, left top network, and this is a subnet address for right top network. और बाकी जो आप असाइन कैसे करते हैं, ऑल जीरोस के साथ तो आप जो है सबनेट एड्रेस बन गया, उसके बाद आप होस्ट पार्ट की बिट्स को वेरी करते हैं और टू असाइन नंबर ऑफ होस्ट्स इन दैट सबनेट। मसलन 8 बिट्स, सबनेट पार्ट तो सेम होता है, मैंने आपको आप ऑलरेडी बता चुका हूं, सबनेट पार्ट तो सेम होता है ना। तो अब आप डिफरेंट होस्ट को डिफरेंट आईपी एड्रेस असाइन करने हैं, तो आप क्या करेंगे, होस्ट पार्ट की बिट्स को वेरी करेंगे। इन दिस केस होस्ट पार्ट बिट्स कितनी है, 8 बिट्स हैं। तो 8 बिट्स के हिसाब से कितने होस्ट बन सकते हैं, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस यू कैन हैव फॉर आईपी एड्रेस? 8 बिट्स के साथ होस्ट पार्ट के 8 बिट्स हैं, तो 2 raised power 8 कॉम्बिनेशंस। ठीक है जी। Is it okay to everyone? यस सर। तो अब आप कैसे असाइन करेंगे, अब आप ये करेंगे कि ऑल जीरोस वाला तो सबनेट एड्रेस हो गया, उसके बाद आप इसको चेंज करेंगे, जीरो को जो है, क्योंकि होस्ट पार्ट को चेंज करना है, जीरो के बाद 1, तो 2 2 3 1 1 आप एक क्लाइंट को दे देंगे, फिर 2 सेकंड क्लाइंट को, 3 थर्ड क्लाइंट को। इस तरह आप जो है मैक्सिमम 255 तक जा सकते हैं, 255 ऑल है, ठीक है। लेकिन ऑल जीरोस के साथ आप किसी क्लाइंट होस्ट को नहीं असाइन करते। ऑल जीरोस जो है वो सबनेट एड्रेस होता है, होस्ट पार्ट की ऑल जीरो बिट्स जो हैं वो सबनेट पार्ट की होती हैं, सबनेट एड्रेस का हिस्सा होता है, तो वो किसी होस्ट को असाइन नहीं करनी है, राउटर इंटरफेस को असाइन नहीं करना। इसी तरह ऑल वंस भी जो होस्ट पार्ट की ऑल वंस है वो भी किसी होस्ट या राउटर इंटरफेस को असाइन नहीं करते। ये 2 एक्सेप्शंस हैं, कीप दिस 2 एक्सेप्शंस इन योर माइंड। ओके। Okay, Ji, I assume let's move to the next one. So look at this. Where are the subnets? How many subnets here? सर 3। 3. क्यों 3? आप डिटैच करें, वही रूल बताएं, डिटैच करें। सबनेट की रेसिपी पढ़ी थी ना, आप डिटैच कर दें, क्लाइंट्स को, लिंक्स को रहने दें। कितने आइलैंड्स बन जाएंगे? सर एक डिटैच राउटर कर वाला दें भी बन जाएगा तो 4 हो जाएंगे। 4 और गौर करें, डिटैच कर दें राउटर्स को और होस्ट को। 6 सर। 6, आंसर इज 6, आंसर इज 6। आंसर इज 6। और 24, अब आपने ये देखना है कि सबनेट एड्रेसेस कैसे पता लगेंगे कि आपका सबनेट पार्ट विद इन अ सबनेट सेम होगा।
अब ये देखे 223.19 ये 3 बाइट्स जो है ना, और ये जो बॉटम पे 223 सेम है। इसका मतलब ये है कि 3 बाइट्स जो है सेम होने का मतलब ये है कि ये तीनों बाइट सबनेट पार्ट का हिस्सा है, और 3 बाइट्स का मतलब है कि इसका जो मास्क है वो /24 होगा। है वालों कौन है? 6 सबनेट्स हैं इसमें। /24 बता रहा है कि आपकी सबनेट पार्ट के अंदर कितने बिट्स हैं, और ये रेड कलर वाला सबनेट एड्रेस है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। राइट जी? तो क्वेश्चन है किसी को पूछें? So that's why I told you that these all सर together. Please go ahead. सर ये लिंक्स के ऊपर जो यानी कि ये सबनेट का क्वेश्चन है, इसके अंदर सर वो सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया ना, ये 7 8 9 आ गया ना। तो पहले 1 2 3 था, वो बाकी जो सिस्टम्स के साथ कनेक्टेड है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं 4 6 वो भी सेम ही होगा। देखें आप ऐसे करते हैं, इससे देखें वो आपको जो है ना आईपी एड्रेस, आगे आप फर्दर डिटेल पढ़ेंगे। आईपी एड्रेस के अंदर जो मेन चीज है कि आपने जब एलोकेशन करनी है तो सबनेट पार्ट को चेंज नहीं करना विद इन सबनेट, ठीक है? सबनेट पार्ट के बिट्स को चेंज नहीं करना। तो ये जो 3 बाइट्स हैं ये सबनेट पार्ट की बाइट्स है, ये सबनेट एड्रेस नहीं है, 3 बाइट सबनेट पार्ट के एड्रेस है, ठीक है? बाकी जो होस्ट पार्ट की बिट्स है इनको वेरी करके, तो आप कोई भी ऑल जीरोस, होस्ट पार्ट में जो ऑल जीरोस है वो सबनेट एड्रेस का पार्ट होता है। मैंने आपको पहले बता चुका है, लास्ट स्लाइड में आप देख चुके हैं। यहाँ पे ये देखिए ऑल जीरोस के साथ ये सबनेट एड्रेस हैं। तो बाकी जो वैल्यूज हैं आप उनको कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं किसी भी इंटरफेस को, ये एडमिनिस्ट्रेटर की चॉइस पे होता है। फॉर एग्जांपल इसने इस इंटरफेस को 9 डॉट, ये सबनेट पार्ट की बिट्स तो सेम है, इसमें 9.1 किया है और इसको 9.2 किया है, तो आप इसको 9.1 भी कर सकते हैं, बॉटम को 9.2 कर दें, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग है कि सबनेट पार्ट की बिट्स को चेंज नहीं करना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी क्लाइंट को, कौन से होस्ट को कौन सा देंगे, लेकिन विद इन द रेंज देंगे। सर पिछली स्लाइड में सबनेट तो जब मेंशन था उस पे 4 बाइट्स थी। जी इस पे योर ऑब्जर्वेशन इज वेरी वैलिड। असल में पिछली स्लाइड में वो सबनेट एड्रेस थे, 4 बाइट्स सबनेट एड्रेस था, उसमें होस्ट पार्ट की बिट्स भी शामिल थी। यहाँ पे ऑथर ने सिर्फ सबनेट पार्ट की बिट्स बाइट्स को शो किया है, ये सबनेट एड्रेस नहीं है। 3 बाइट्स जो है ये सिर्फ सबनेट पार्ट है। जब आप इसके साथ होस्ट पार्ट के अपेंड 0 कर देंगे तो ये सबनेट एड्रेस बन जाएगा। आर यू फॉलोइंग माय पॉइंट? सर वो जो रेसिपी आपने बताई थी वो सबनेट एड्रेस की, वो तो सबनेट फाइंड आउट करने की रेसिपी थी कि हाउ मेनी सबनेट्स आर देयर। सर ये यानी कि अगर सिस्टम डेवलप है तो उस केस के अंदर वो यूज़ हो सकती है। अगर मैं सिस्टम डेवलप कर रहा हूँ तो उस केस के अंदर मैं सबनेट अपनी मर्जी से, उस केस में क्या होगा? नहीं, सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपके आंसर होंगे, आगे हम प्रोसीड करेंगे। आपको आईपी एड्रेस चाहिए, आपको एक्चुअली आप आईएसपी के पास आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, और ब्रीफली मैं बता देता हूँ। आप जो है वो आईएसपी के पास जाएंगे, आप उससे एक आईपी एड्रेस लेंगे, वो आपको बता देगा कि ये आईपी एड्रेस है, इसमें इतनी सब, इसका ये मास्क है 24 है, तो वो आपका सबनेट पार्ट आपको पता लग जाएगा। अब आप होस्ट पार्ट की बिट्स अपनी मर्जी से वेरी करके आप जो है क्लाइंट्स को डिफरेंट आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे। फॉर इंस्टेंस आपको 24 मास्क के साथ 20/24 के साथ आपको सबनेट पार्ट मिलता है आईएसपी से, कोई भी आईपी एड्रेस मिलता है /24 से, तो आप 3 बाइट्स जो हैं हायर ऑर्डर 3 बाइट्स उनको चेंज नहीं कर सकते। तो जो 4th बाइट होगी, रिमेनिंग 8 बिट्स जो बनती हैं उसको आप वेरी करेंगे, और उनको वेरी करके आप डिफरेंट होस्ट को आईपी एड्रेस खुद अपनी मर्जी से असाइन करेंगे। इज इट ओके? यस सर। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑथर ने कंफ्यूज कर दिया है, ये सबनेट पार्ट है, ये सबनेट एड्रेस नहीं है। सबनेट एड्रेस कैसे बनेगा?
pending a post byte. पोस्ट का डाल दें। हाँ, फोर्थ बाइट डाल दें आप। ये सबनेट पार्ट की बिट्स हैं, बाइट्स हैं, सॉरी। अब आप फोर्थ सिंपली जीरो डाल दें, डॉट जीरो, क्योंकि आपको पता है सबनेट एड्रेस में ऑल होस्ट पार्ट बिट जीरो होती हैं। इसके साथ सारों के साथ डॉट जीरो डाल दें तो ये सबनेट एड्रेस बन जाएंगे। ओके जी। ओके, if you have understood this, now let's move to next topic, which is known as CIDR. CIDR stands for classless interdomain routing. It is pronounced as CIDR. So I think let me tell you the brief history. Initially, when internet was invented, तो आपकी सबनेट पार्ट की बिट्स और होस्ट पार्ट की बिट्स फिक्स्ड थी। डिफरेंट क्लासेस वर डिफाइंड। आप लिटरेचर में जाके पढ़ भी सकते हैं कि डिफरेंट क्लासेस वर डिफाइंड, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, और हर क्लास के अंदर सबनेट पार्ट की बिट्स और होस्ट पार्ट की बिट्स फिक्स थी। लेकिन करंटली इंटरनेट के अंदर अब वो फिक्स्ड part, subnet part bits or host part bits are not used. Now we use CIDR, and in this CIDR, subnet portion of the address bits are not fixed and they can be of arbitrary length. ठीक है, तो remaining bits host part की बन जाएंगी। तो the standard notation is this for CIDR: a dot b dot c dot d। ये IP address है, हर byte IP address के /x, और x ये बताएगा कि what are the number of bits in subnet portion of address. We have already discussed this thing। /24 से मुराद ये थी कि 24 बिट्स हैं, /28 से मुराद है 28 बिट सबनेट पार्ट की है, /16 से मुराद है। So x can have any value less than 32, right जी? So this is what we call CIDR. So this is what we have. For instance, look at this. This is an IP address. Bottom is a dotted decimal. We call it a dotted decimal notation. /23. /23 means that higher order 23 bits are part of subnet. Look at these blue bits. Count them. They are 23. So remaining bits are host part. So how many bits for host part? 32 minus 23. 9 bits are for host part. 9 bits के साथ आप कितने addresses generate कर सकते हैं? 2 to the power 9 addresses. लेकिन 2 रेज पावर 9 एड्रेसेस में से कितने होस्ट को असाइन कर सकते हैं? होस्ट और राउटर के इंटरफेस को कितने एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं? इसका रूल है 2 रेज पावर 9 माइनस 2, क्योंकि ऑल जीरोस जो आप होस्ट पार्ट का है वो नेटवर्क एड्रेस बन जाएगा, सबनेट एड्रेस। ऑल जीरोस को आप किसी क्लाइंट होस्ट को या राउटर इंटरफेस को नहीं दे सकते, और ऑल वंस भी नहीं दे सकते। ऑल वंस जो होस्ट पार्ट के ऑल जीरोस और ऑल जीरोस सबनेट एड्रेस के लिए यूज होते हैं, और ऑल वंस ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होते हैं। जब आपने इंफॉर्मेशन तमाम होस्ट को विद इन सबनेट पहुंचानी हो तो ऑल वंस कर देते हैं होस्ट पार्ट के, तो उससे ब्रॉडकास्ट हो जाता है। तो नंबर ऑफ क्लाइंट्स, नंबर ऑफ होस्ट्स इंक्लूडिंग राउटर इंटरफेसेस, हाउ मेनी यू कैन हैव इन केस ऑफ 9 बिट्स, कितने हो जाएंगे? कैलकुलेट कर सकते हैं। 510 2 रेज पावर 9 कितनी होती है वैल्यू? इसमें 9 बिट्स है ना उस पार्ट की। 520 कितनी हो जाएंगी? 2 रेज पावर 9 कितना होता है? 512, 512। 512, और 512 में से कितने होस्ट आप बना सकते हैं? कितने होस्ट? 510 510। ओके, यानी 510 होस्ट इंक्लूडिंग राउटर इंटरफेस जो सबनेट का हिस्सा है वो आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आप वेरी करेंगे बिट पैटर्न्स को होस्ट पार्ट के, और आप हर किसी को असाइन कर देंगे कि जी ये आपका आईपी एड्रेस है। सबनेट पार्ट सब में सेम होगा, लेकिन होस्ट पार्ट को आप वेरी करेंगे और हर क्लाइंट को होस्ट को असाइन करना शुरू कर देंगे इंक्लूडिंग राउटर इंटरफेस। ओके, दिस इज हाउ आईपी एड्रेसिंग इज डन। सर ये होस्ट कितने कर सकते हैं, ये दोबारा बता दें। 510 कर सकते हैं बेटा, मैंने आपको कहा ना कि 2 रेज पर इसमें होस्ट पार्ट की बिट्स कितनी है? 9 बिट्स हैं। ठीक हो गया? तो 2 रेज पर 9 कितने एड्रेसेस बनते हैं? 2 रेज पर 9 एड्रेसेस टोटल कितने बनते हैं वेरी करने से? 2 रेज पर 9 मींस 512 आई बिलीव। ठीक है? यस सर।
अब 512 में से ऑल जीरोस जो होस्ट पार्ट के हैं वो सबनेट एड्रेस होता है, मैंने आपको पहले बता चुका हूं। तो आप किसी क्लाइंट को या राउटर इंटरफेस को नहीं दे सकते वो। एक ये हो गया स्पेशल। और होस्ट पार्ट में अगर आप ऑल वंस करेंगे तो वो भी स्पेशल है, वो ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होता है। आपने अगर तमाम होस्ट को विद इन सबनेट कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो उसमें होस्ट पार्ट को ऑल वन कर देते हैं। वो भी किसी क्लाइंट को, किसी होस्ट को या राउटर इंटरफेस को असाइन नहीं कर सकते। तो ये जो दो एड्रेसेस हैं ये स्पेशल हैं कि एक सबनेट एड्रेस के लिए यूज होता है और एक ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होता है। तो 512 एड्रेसेस टोटल है, तो 512 - 2, तो आप कितने होस्ट इंक्लूडिंग क्लाइंट जो राउटर इंटरफेस कितने बना सकते हैं? 510। ओके सर। तो होस्ट पार्ट आपको ये बताता है कि कितने आप होस्ट अपने नेटवर्क में लगा सकते हैं। जितने ज्यादा बिट्स होस्ट पार्ट की होंगी उतनी ज्यादा आप होस्ट असाइन कर सकते हैं। सबनेट पार्ट सब में सेम रहेगा। ओके जी, इज इट ओके? Any question? If you have any question, welcome. If no, I'll proceed further. So now, how to get one an IP address? आपको कैसे IP address मिलेगा? How does a host get IP address within its network? Host part of IP address. First question ये arise होता है. How does a network get IP address for itself? Network part आपको चाहिए ना? Network part से मुराद यहाँ पे वही है नेटवर्क पार्ट जो आपको ISP देती है। बहरहाल these are the two questions. So we'll learn the answer of these questions. क्वेश्चन समझ आ गए हैं? वैसे मैं बता चुका हूँ बिट्स एंड पीसेस में आपको इसके आंसर। बहरहाल ओके जी, क्वेश्चन is it clear? All these questions are clear to you? Let's have a find out answers for these questions. So how does host get IP address? So one is कि आप जो है आप इस तरह करें कि आपको ISP से आपको मास्क मिल गया, आपको नेटवर्क पार्ट मिल गया। अब आप ये करें एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, हर कंप्यूटर पे जाएं और हर कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट IP एड्रेस इंसर्ट कर दें। एक तरीका ये है होस्ट के लिए, लेकिन ये तरीका कोई इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। दिस इज नॉट एन एफिशिएंट वे ऑफ assigning IP address to host. Why? For example, if your network is having 1,000 computers, so you will go to every computer to insert address. Second issue is, what about Wi-Fi devices? हर वाईफाई डिवाइस वाला आपको एडमिनिस्ट्रेटर को ढूंढता रहेगा कि जी मुझे आईपी एड्रेस असाइन करें। तो दिस इज नॉट एन एफिशिएंट वे। द मोस्ट common method which is used is for assignment, dynamically assignment of IP addresses, is known as DHCP. We call it as DHCP. DHCP is a protocol which is used for assigning IP addresses to hosts automatically without the intervention of network administrator, and DHCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol. So the purpose of DHCP is to assign IP addresses to hosts automatically, and this is a plug and play protocol. You don't need any special configuration in it, but you must have a DHCP server, and that DHCP server basically assigns IP addresses to hosts automatically. How DHCP works? Now next slides will talk about the working of DHCP. Please have a look on it. If you have any question, welcome to ask.
इज इट ओके जी? ऑब्जेक्टिव समझ गए DHCP का? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर ये हार्ड कोडेड बाय एडमिन, ये जो हम खुद मैनुअली पुट करते हैं, ये वो है? जी जी बिल्कुल, मैनुअली कि आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर खुद आके या आपको एक आईपी एड्रेस असाइन कर देता है, कहता है ये आपका आईपी एड्रेस है कंप्यूटर का, तो आप उसको खुद मैनुअली इंसर्ट करते हैं। सर सपोज ये जो हमारा राउटर लगा होता है, इसका फिक्स्ड होता है आईपी एड्रेस? घर पे डीएसएल यस में, सर। डीएसएल यस में सर। डीएचसीपी यूज होता है बेटा, डीएचसीपी यूज होता है, उसके अंदर डीएचसीपी बिल्ट इन होता है, हार्ड कोडेड नहीं होता। ओके सर। हार्ड कोडेड तो कोई नहीं यूज करता आजकल। मैं बस एक ऑप्शन मौजूद है, आप कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग हार्ड कोडेड अब यूज नहीं होते। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड। So now let's have a look on the working of DHCP. So host dynamically obtains IP address from network server when it joins a network. अब ये IP address है और the functionality is this के IP address can be leased, लीज किया जा सकता है IP address को। लीज करने की रीजन है, लीज करने की रीजन ये है कि अब लेट्स से कि आपका हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर लेट्स से कि एक ट्रिप आ गया, उसके अंदर 200 स्टूडेंट्स आ गए। अब तमाम 200 स्टूडेंट्स के पास डिवाइसेस हैं और वो दे वांट टू एक्सेस टू इंटरनेट। अब अगर हम उन्हें 200 आईपी एड्रेसेस चाहिए, ठीक है, अब अगर हम उन्हें परमानेंटली 200 आईपी एड्रेसेस दे दें, तो जब वो 3 डे विजिट के बाद वापस जाएंगे तो वो तो आईपी एड्रेसेस यूजलेस हो जाएंगे, वो तो अपने घर चले गए। So therefore we can lease it for certain period of time, and then we can renew, the lease can be renewed, and as a result we can reuse the IP addresses only when you are connected, and then next time when you connect you may get a new IP address, and that can be leased for 24 hours for certain period, and then it can be renewed. So there is a support for mobile users, as I already told you, when they join or leave network. So what is the how DHCP works? So it basically has 4 types of messages. The host basically, when it comes to the environment of a network, it basically broadcast. Broadcast आपको पता है definition क्या है? What is the definition of broadcast? जी कौन बताएगा definition of सर वन broadcast? टू मैनी कम्युनिकेशन होता है, एक होस्ट से नंबर ऑफ होस्ट से तक कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट। Broadcast का जो simple example है airport announcement, means के you announce to everyone, everyone listens, ठीक है, you announce to everyone, you send data to everyone in the network. So the host basically can broadcast this DHCP because जब host network के अंदर आता है तो उसे पता नहीं होता कि DHCP server कहाँ है, तो it can broadcast a DHCP discover message. This is optional, and then DHCP server in response to that DHCP offer message. This is also optional, but it can be done. Then host requests the IP address from DHCP server, and that is known as DHCP request message. And the fourth step is DHCP server sends the address, and that is known as DHCP ACK message. So these are the 4 types of messages which are used to get an IP address by a host. So we will look into it one by one. So let's move to the next slide and let's have a look on it. Now this is a DHCP client server scenario. This diagram basically tells you a DHCP client server scenario. So as you have seen that this is the same network which we have already studied, but here we have one more thing. This is a base station Wi-Fi router which is connected to
Wi-Fi base access point which is connected to this router. And now this is our DHCP server. Now there is no need to have a dedicated system for DHCP server. DHCP server can be implemented in a any system as a separate entity. So we are calling it as a DHCP server. Now typically DHCP server is co-located in router serving all subnets to which router is attached. तो ये राउटर जो तमाम सबनेट्स के साथ अटैच है 3 सबनेट्स के साथ, तो ये सर्व करेगा तमाम सबनेट्स को. So let's say कि client arrives in this subnet. Let's say that DHCP arriving client, ये client है, लैपटॉप है, आप लेके आए हैं let's say यूनिवर्सिटी के अंदर इस नेटवर्क के अंदर. This is the first step. Now naturally this client needs a IP address to have internet access, right? So how it will work? Look at the scenario. The client आया है, अब कैसे काम करेगा? Next slide will tell you how IP address will be taken. So this is our DHCP server. Left side इसका IP address ये है 223.1.2.5 और arriving client है, इसका इस वक्त कोई IP address नहीं है. Okay जी. So first step, arriving client will, because arriving client does not know the IP address of DHCP server, so it will broadcast. In simple English, it will ask that is there any DHCP server out there, right? Practically it's not like this. Practically ये चीज आती है क्योंकि उसका अपना IP एड्रेस नहीं है, तो सोर्स का जो IP अपना एड्रेस होगा ऑल जीरोस होगा. जब उसके पास कोई IP एड्रेस नहीं है तो वो अपना IP एड्रेस ऑल जीरो से साइन करेगा. ये पोर्ट नंबर है 68, राइट? और डेस्टिनेशन ये देखिए 255 250 ऑल वंस ब्रॉडकास्ट इनटू द नेटवर्क, ऑल वंस. और ये असाइनमेंट के लिए आईपी एड्रेस यूज होती है. इनिशियली इसे कोई आईपी एड्रेस नहीं असाइन किया गया और ये ट्रांजैक्शन आईडी है. ये जो है वो मैसेज जो है वो बेसिकली ब्रॉडकास्ट करेगा अराइविंग क्लाइंट. अब नेचुरली जब ये ब्रॉडकास्ट होगा तो एवरी होस्ट इन दिस नेटवर्क इंक्लूडिंग डीएचसीपी सर्वर विल लिसन टू इट. सो नेचुरली होस्ट, बाकी होस्ट तो रिप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वो डीएचसीपी नहीं है सर्वर, तो डीएचसीपी सर्वर will respond to it. So DHCP server will respond in English, I am a DHCP server, here is an IP address you can use. अब वो क्या होगा एक्चुअली, ये तो इंग्लिश में जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन के लिए है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट विल सेंड दिस सोर्स. लुक एट दिस सोर्स के माय सोर्स कहां से आ रहा है, ये DHCP सर्वर का IP एड्रेस है. ये जो सोर्स है DHCP और ये इसका पोर्ट नंबर है. अब क्योंकि डेस्टिनेशन जो है वो अभी इसको आईपी एड्रेस असाइन नहीं हुआ, उसका कोई आईपी एड्रेस नहीं है, तो डेस्टिनेशन डीएचसीपी सर्वर भी ब्रॉडकास्ट करेगा डेस्टिनेशन ऑल 255 और पोर्ट एड्रेस 68. ये वही पोर्ट एड्रेस है जो अराइविंग क्लाइंट ने यूज किया था. और YADR उसको जो एड्रेस ऑफर हो रहा है वो ये एड्रेस ऑफर कर रहा है अब उसे डीएचसीपी सर्वर 223.12.4 ये एड्रेस ऑफर कर रहा है अराइविंग क्लाइंट को. और ट्रांजैक्शन आईडी 654 थी डिस्कवर मैसेज की, वही ये होगी. इससे ये पता लगेगा अराइविंग क्लाइंट को कि ये मेरी रिस्पांस है जो मैंने ब्रॉडकास्ट भेजी थी, उसके रिस्पांस में ये आ रही है. और 3600 सेकंड इसका लीज टाइम है. So this IP address 223.12.4 will be offered to arriving client. DHCP सर्वर भी सबको ब्रॉडकास्ट कर रहा होगा क्योंकि उसकी जो डेस्टिनेशन है वो भी उसी तरह की है जिस तरह अराइविंग क्लाइंट ने डेस्टिनेशन का एड्रेस दिया था. इसलिए कि अराइविंग क्लाइंट का आईपी एड्रेस तो इस वक्त मौजूद ही नहीं है ना. अराइविंग क्लाइंट के पास तो आईपी एड्रेस है ही नहीं है, तो वो ब्रॉडकास्ट ही करेगा. तो अराइविंग क्लाइंट को कैसे पता लगेगा? ट्रांजैक्शन आईडी से उसे पता लगेगा कि ये जो ट्रांजैक्शन आईडी दोनों की सेम होगी. इससे पता लगेगा कि ये मेरी डिस्कवर मैसेज का रिस्पांस है. ओके जी. ओके सर. ओके नेक्स्ट स्टेप. दो हो गए स्टेप. So these two steps can be skipped.
ये क्योंकि ऑप्शनल है इसलिए है कि अगर क्लाइंट को पता है DHCP सर्वर का, तो if a client remembers and wishes to reuse a previously allocated network address, तो इसको skip भी किया जा सकता है. Then DHCP सर्वर जो है वो फिर जब ये ऑफर उसे मिलेगी अराइविंग क्लाइंट को, तो DHCP जो रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा सर्वर को कि ब्रॉडकास्ट करेगा, फिर ब्रॉडकास्ट करेगा ओके आई वुड लाइक टू यूज दिस आईपी एड्रेस, ये जो ऑफर हुआ है से एड्रेस ऑफर हुआ है, यस आई वुड लाइक टू यूज दिस आईपी एड्रेस, वो क्या होगा, अगेन ब्रॉडकास्ट होगा. दिस इज आवर प्रोटोकॉल. सोर्स अभी उसको असाइन नहीं हुआ, 000 डेस्टिनेशन ये ब्रॉडकास्ट करेगा कि ये आईपी एड्रेस जो मुझे ऑफर किया गया है ये मैं यूज करना चाहता हूँ, और ये नई ट्रांजैक्शन आईडी के साथ करेगा 655, और लाइफ टाइम वही बताएगा कि जी मैं इतने के लिए मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि मैं इतने टाइम के लिए आई विल यूज इट. ओके, एंड देन DHCP acknowledgement will come from DHCP server. Broadcast, okay, you have got this IP address. Now look at this. अब आप देखें सोर्स क्या है, DHCP एक का सोर्स वो उसका अपना है, डेस्टिनेशन फिर ब्रॉडकास्ट करेगा और उसको कहेगा ओके, एंड आफ्टर this IP address of 223.12.4 will be assigned to arriving client, and then afterwards it can use internet. So these is the steps for getting an IP address from DHCP server for a arriving client automatically, dynamically. So have a look on it. किसी को कोई question है तो welcome. I'll give you 2 minutes for it. क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं, तो you will get 2 minutes for it, for review of it. सर अगर मल्टीपल क्लाइंट्स एट द सेम टाइम अराइव होते हैं, कोई बात नहीं, वो सर सारों को वो रिस्पॉन्ड करेगा, उन सारों के सर ट्रांजैक्शन आईडी डिफरेंट होंगे ना, होते हैं मल्टीपल क्लाइंट्स आते हैं, कोई मसला नहीं है, क्या मसला है, वो सारे यही स्टेप्स करेंगे. सर तो सोर्स एड्रेस जो होगा सर वो तो अज्यूम 0 सारी करेंगे एट द सेम टाइम. हाँ तो कोई बात नहीं, सोर्स 0 करते रहें, इससे क्या फर्क पड़ता है. हेलो, उससे तो कोई 0 तो इसलिए असाइन किया है कि उसके पास कोई आईपी एड्रेस है ही नहीं इनिशियली, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो ब्रॉडकास्ट कर रहा है ना, जब डेस्टिनेशन जो है वो ब्रॉडकास्ट हो रही है, ब्रॉडकास्ट तो सब सुनेंगे. ओके सर. डेस्टिनेशन तो ब्रॉडकास्ट है ना, आप उस वक्त कह सकते हैं कि अगर डेस्टिनेशन 000 लिख दे DHCP सर्वर, फिर नहीं पता लगेगा कि कौन सा 000 है, पर डेस्टिनेशन तो में वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है. देखिए डेस्टिनेशन के अंदर DHCP सर्वर ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो हर अराइविंग क्लाइंट को अपनी ट्रांजैक्शन आईडी से पता लगेगा कि ये उसके लिए रिस्पांस है कि नहीं है. Are you following my point? यस सर, आई गॉट इट. Okay जी, any question? Any other question? Naturally बहुत सारे अराइविंग क्लाइंट्स आ सकते हैं, there is no bar in it. DHCP server will respond to it. Okay जी, if you have understood it, so let's move to the next slide. So DHCP can return more than just allocated IP address on it. Additional information भी DHCP आपको देता है. Address of first hop router for the client भी ये assign दे सकता है आपको IP address, name and IP address of DNS server, and network mask will also be provided by DHCP server. So this is the additional information which can be provided by DHCP. Now let's take a example, again an example.
So this router with DHCP server built into it. ये router के अंदर ही DHCP server, ये आप जो घर के अंदर आप DSL देखते हैं ना, इसके अंदर बड़ा कुछ built in होता है. ये router इसे कहते हैं, ये इसके अंदर DHCP server भी built in है. ठीक है, तो routers के अंदर DHCP server built in होता है, वरना तो आपको IP एड्रेस मिले ही ना, आप वाईफाई डिवाइसेस आप अपने घर में लगाएं तो, राइट. हेलो, so let's have a look in it. ये क्लाइंट अब आपका आया है, ये क्लाइंट आया आपका, ठीक है. तो अब ये कैसे काम करेगा? DHCP नीचे, DHCP जो है वो नीचे UDP प्रोटोकॉल यूज करता है. कनेक्टिंग लैपटॉप विल यूज DHCP टू गेट IP एड्रेस ऑफ फर्स्ट हॉप राउटर एंड एड्रेस ऑफ DNS सर्वर. तो UDP प्रोटोकॉल यूज करेगा. फिर IP नीचे है, नीचे इथरनेट है, नीचे फिजिकल लेयर है. ये तमाम लेयर्स की बात हो रही है. So DHCP request message encapsulated in UDP, then it will be encapsulated in IP. ये वही layering structure है. फिर encapsulated in Ethernet frame, right? Then this Ethernet frame will go to broadcasted in the network, and eventually, naturally, DHCP server will receive it. अब Ethernet के अंदर जो ब्रॉडकास्ट होती है वो फ्रेम के अंदर, क्योंकि इथरनेट हेक्साडेसिमल है, इसकी 48 बिट्स होती हैं और ये हेक्साडेसिमल नोटेशन होती है. ये आगे हम चैप्टर 6 में डिटेल में विल स्टडी, बट ब्रॉडकास्ट फॉर इथरनेट इज ऑल एफ्स, ठीक है, on LAN and then running DHCP server. So these are the 3 steps which will be done. Have a look on these steps. अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछें. जी सामा बार बार क्यों फोन कर रहे हैं, बार बार फोन क्यों कर रहे हैं जनाब अली? इस वक्त मेरी क्लास हो रही है, तो अगर आपने तशरीफ लाना है तो 2:45, ठीक है. ओके ओके जी, प्लीज गो अहेड. इफ नो, लेट्स प्रोसीड फर्दर. तो नेक्स्ट में क्या होगा? इथरनेट डीमल्टीप्लेक्स होगा. उसी तरह रिवर्स ऑर्डर में जो है वो, जिस तरह आपका लेयरिंग स्ट्रक्चर यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 1, इसी तरह अनरैपिंग होगी, डीमल्टीप्लेक्सिंग होगी, एंड इट विल गेट अ DHCP सर्वर विल गेट अ DHCP मैसेज. एंड देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? DHCP सर्वर फॉर्मुलेट्स अ DHCP ACK मैसेज containing IP address of first hop router for client and DNS server, and then again the same thing will happen. It will encapsulate DHCP reply and forward it to client, and client will demultiplex up to DHCP at client. Right, Ji? Now client knows the IP address, its IP address, name and IP address of DNS server, IP address of first hop router. Is it okay to everyone? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछें. Okay जी, can you hear me? आवाज आ रही है सबको? Am I यस audible सर, well? आ रही है. Okay, good. So if you have any question, welcome. Otherwise, I'll move to next slide. So soon we will take a break. So, but we'll finish this topic
before moving to break of DHCP. So okay, you have got this. So now let's take a break here. Now this complete discussion on DHCP. Now next thing we will discuss how to get a IP address, subnet part of IP address. How to get a subnet part of IP address. So we'll discuss this after break. So let's have a 15 minutes break. So try to come in the time so that we can start class within time. क्योंकि हमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी है और क्विज भी होगा आज आपका, ठीक है। और अटेंडेंस तमाम लोग प्रेजेंट हैं। आज मैंने अटेंडेंस नहीं ली टाइम शॉर्टेज की वजह से, तो आई अज्यूम कि तमाम लोग प्रेजेंट हैं। नौमान, आप प्लीज चेक करके मुझे ब्रेक के बाद बता देंगे कि कौन कौन एब्सेंट है। वैसे तो क्विज होगा, सब पता लग जाएगा। ओके, लेट्स हैव अ ब्रेक नाउ।
ओके जी, ब्रेक टाइम इज ओवर जी। आवाज आ रही है सबको? कैन यू लिसन टू मी? Yes, sir. Okay. So everyone is here? Naman sahab? आपके सीआर ही नहीं मौजूद हैं। चलें एक आध मिनट और देखते हैं। जी सब आ गए हैं। नोमान साहब, सीआर साहब, आप मौजूद हैं? जी बाकी लोग? लेट मी टेक द अटेंडेंस। ये बाकियों को पता लगे कहाँ पे हैं। जी 01 प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। 02 प्रेजेंट सर। 03 Present, sir. 5 Present, sir. 10 not here। 17 18 27 Sir, sir 01 present. No sir 01 सर मेरे सिग्नल्स का इशू है ना, तो वो यहाँ पे सिग्नल्स का बहुत इशू होता है, तो सिग्नल्स ड्रॉप हो गए थे, मुझे आवाज़ नहीं आई थी। 27 है ना। 36 Yes sir present 36। 27 प्रेजेंट नहीं है। नुमान इसाक साहब लंबी ब्रेक पे चले गए हैं। No sir, I am present sir. Actually, laptop. चलें 46 Excuse me sir। 46 फोर पहले थ्री है 46 पे बात आएगी। 46 सर 4-3 नहीं आपने बोला। 43 हो गया। 46 Present, sir. 53 Present sir। 56 Present sir। अब लास्ट 2 वीक से एब्सेंट थी। यस सर, मैं जल्दी चली गई थी।
क्लास से।